Hello students, myself Falguni Solanki. Welcome to our channel. In this lecture, this one is the part 2 of active and passive voice part 2. So we can say that this one is the active and passive voice part 2.2. So now in first one we have convert active to passive. Now in this one we will convert passive to active. First one is the arrangements were being looked after by our sports teacher. The arrangement were being looked after by the sports teacher. Now the arrangements it's a place of subject. वो subject है तो हमको उसको कहाँ पे ले जाना है? Object के place पे ले जाना है उसको. Now sports teacher यहाँ पे object है, उसको हमें कहाँ ले जाना है? Subject के form पे ले जाना है. चलो नाउ अब स्पोर्ट्स टीचर. नाउ यहाँ पे अरेंजमेंट्स यानी कि मोर देन वन था, दैट्स वाई यहाँ पे वर्ड था, बट यहाँ पे तो सिंगल टीचर है. सो अब स्पोर्ट्स टीचर वॉज लुक्ड आफ्टर. लुक्ड आफ्टर का क्या हुआ? लुकिंग आफ्टर. लुकिंग आफ्टर दी अरेंजमेंट्स. तो हमने जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट था उसको इंटरचेंज कर दिया. उसके बाद जो वर्ड था यहाँ पे उसको नया जो हमें सब्जेक्ट मिला है द स्पोर्ट्स टीचर, इसका अकॉर्डिंग हमने सिंगुलर फॉर्म दिया, वॉज बीइंग लुक्ड आफ्टर. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट बीइंग लुक्ड आफ्टर हाउ कन्वर्ट इनटू लुकिंग आफ्टर. तो बीइंग लुक आफ्टर यहाँ पे क्या है? कंटिन्यूज है. हाउ कैन आई रिकग्नाइज दिस वन इज कंटिन्यूस? बिकॉज यहाँ पे बीइंग है. तो मुझे समझ में आ रहा है कि जो वर्ब है ना मुझे उसको एक्टिव में ले जाते टाइम उसको कंटिन्यू दिखाना है, यानी कि आईएनजी दिखाना है. समझ में आ रहा है बीइंग का यूज़. और वर्ड तो है ही वो पास्ट कंटिन्यू दिखाने के लिए. तो मैंने वर्ड का क्या कर दिया? वॉज, बिकॉज माई न्यू जो सब्जेक्ट है वो स्पोर्ट्स टीचर सिंगल है. नाउ बीइंग लुकिंग आफ्टर का हम लोगों ने कर दिया, लुक ईडी निकाल दिया और यहाँ पे आईएनजी रख दिया. सो ये हो गया बीइंग और निकाल के लुकिंग आफ्टर. समझ में आ रहा है? तो जो बाय भी रिमूव हुआ क्योंकि एक्टिव में जा रहा है, तो एक्टिव में तो हमारा डूअर ऑफ सेंटेंस एंड डूअर ऑफ एक्शन एक ही होगा. तो बाय निकल रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट आएगा ऑब्जेक्ट अरेंजमेंट्स. तो वर स्पोर्ट्स टीचर वॉज लुकिंग आफ्टर द अरेंजमेंट्स. So this one is our first sentence of passive to active. Now in second sentence we have we saw our borders being patrolled by the jawans. वापस पढ़ते हैं सेंटेंस को. We saw our borders being patrolled by the jawans. तो यहाँ पे मैंने हेडिंग ऑलरेडी दिया है. पैसिव टू एक्टिव में सेंटेंस तो पैसिव ही है. हाउ कैन यू रिकग्नाइज? फर्स्ट वन इज बाय, सेकेंड वन इज बीइंग. तो सेंटेंस तो बीइंग है यानी कि यहाँ पे बीइंग है, यहाँ पे शॉ है. सेंटेंस तो कंटिन्यूज है और शॉ इंडिकेट कर रहा है कि ये पास्ट कंटिन्यूज है. नाउ लेट्स कन्वर्ट दिस वन इनटू एक्टिव वॉइस. Active voice, we have sentence we saw the jawans patrolling our borders. तो प्रीवियस सेंटेंस आपको याद दिला दूँ. सेंटेंस था we saw our borders being patrolled by the jawans. तो यहाँ पे एक्टिव क्या हुआ? we saw remain we saw, क्योंकि हम लोग वो जो एक्शन था it was already done in the past. बट जब आपने देखा तो वहाँ पे कंटिन्यूज वो हो रहा था, यानी कि पास्ट कंटिन्यूज आप दिखा रहे हो यहाँ पे. तो वी सो में यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा. वो आपको दिखा रहा है कि ये सेंटेंस पास्ट का है. समझ में आ रहा है? और जो बीइंग था वो दिखा रहा है कि वो सेंटेंस कंटिन्यूस भी है. तो वी सॉ द जवान्स, यहाँ पे नाउ सब्जेक्ट का काम करेंगे जवान्स. वी सॉ द जवान्स पेट्रोलिंग अवर बॉर्डर्स. समझ में आ रहा है? वापस एक बार वो पैसिव सेंटेंस देखो, बाद में एक्टिव सेंटेंस देखो, यू विल गेट द एग्जैक्ट आइडिया. Now in third one, after a few days, salt was being sold openly by the merchant. वापस देखते हैं. After a few days, salt was being sold openly by the merchant. चलो. First thing is that you have to identify your subject and verb in this subject, verb and object in this sentence. सो आफ्टर अ फ्यू डेज तो आपका कुछ लगता नहीं है, वहाँ पे नो सब्जेक्ट नो वर्ब नो ऑब्जेक्ट. सो सॉल्ट इज योर ऑब्जेक्ट,
यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो सॉल्ट आपका सब्जेक्ट मिल गया। वॉज बीइंग, सो बीइंग इंडिकेट दैट दिस वन इज अ कंटिन्यूस टेंस एंड वॉज इंडिकेट दैट दिस वन इज अ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। सॉल्ट यहाँ पे वर्ब है और ओपनली तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट होता नहीं है, वो सिर्फ एक अदर वर्ड है। एंड बाय के बाद जो है बाय द मर्चेंट, वो आपका होने वाला नया सब्जेक्ट है। ओके, चलो इसको एक्टिव में कन्वर्ट करते हैं। After a few days there is no change in this because it's after all it's a time word, time यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। सो द मर्चेंट जो यहाँ पे था वो आपका सब्जेक्ट है। द मर्चेंट वॉज, बिकॉज सिंगल मर्चेंट है, सो वॉज सेलिंग सॉल्ट ओपनली। सेलिंग क्यों, यहाँ पे जो बीइंग सॉल्ट था वो क्या हो गया, हम लोगों ने यहाँ पे सेलिंग कर दिया। क्यों, बिकॉज दिस वन इज अ एक्टिव फॉर्म ऑफ that past continuous tense. Again, after a few days, the merchant was selling salt openly. In fourth one, when I was being punished by the teacher, the principal appeared. Again, when I was being punished by the teacher, the principal appeared. Again, this one is passive voice, so we have to convert this. Now, as I told you that we do not need to change this second sentence. Whatever we have to do with only first one. So, first when remain when, there is no change. So, I have written here when. Now, I subject, punish is verb and the teacher is object. So, यहाँ पे हमारा जब एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो the teacher will be our subject. So, when the teacher तो सिंगल है, so was, यहाँ पे बीइंग पनिश दिखा रहा है कि पास्ट तो है लेकिन कंटिन्यूस था। सो हम लोग बीइंग पनिश का क्या करेंगे, पनिशिंग, आई एन कन्वर्ट इनटू मी, द प्रिंसिपल अपीयर्ड। नो चेंज इन सेकंड सेंटेंस। अगेन फर्स्ट वन, व्हेन आई वाज बीइंग पनिश्ड बाय द टीचर द प्रिंसिपल एंटर्ड। सो व्हेन आई वाज बीइंग पनिश्ड बाय द टीचर, पैसिव में एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे। सो व्हेन रिमेन व्हेन, द टीचर इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट द टीचर was being punished. So यहाँ पे was being punished जो passive voice में है, when it convert into active voice it become the was punishing, because was remain was but being punished merge into only punishing. I convert into me and the second sentence remain as it is. Okay. Now next one is, I had been trained by my teachers before I started my service. I had been trained by my teachers before I started my service. Read the sentence carefully. Identify the first of all type of sentence, because there is a many type of sentences we have in active and passive voice. So here we can usually identify because we are discussing only particular topic. But whenever we have there is a cluster of all sentences, that time first of all careful to आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। सो यहाँ पे सेंटेंस है ट्रेन बाय दी टीचर। यहाँ पे जो बाय वाला सेंटेंस है उसको हमें कन्वर्ट करना है पैसिव में, सॉरी पैसिव तो है ही, कन्वर्ट करना है एक्टिव में। बिफोर आई स्टार्टेड माई सर्विस में कोई चेंज नहीं करना है, हमको इस सेंटेंस को एज इट इज़ ही लिखना है, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी ये सेंटेंस एक्टिव में ही है। और हम लोगों को इंस्ट्रक्शन क्या मिली है, पैसिव टू एक्टिव, यानी कि पैसिव सेंटेंस को एक्टिव में ले जाना है, एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट नहीं करना है। तो ये तो एज इट इज़ ही रहेगा बिकॉज इट्स ऑलरेडी एक्टिव। Now it's time to convert sentence into active one. So I had been punished by the teacher. तो ऑब्जेक्ट कौन था यहाँ पे, टीचर है, तो उसको सब्जेक्ट के प्लेस में ले जाना है। चलो ले जाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो माई टीचर यहाँ पे आएगा, माई टीचर्स प्लूरल था, हैड तो हैड रिमेन हैड, बीन ट्रेन पैसिव था, दैट्स वाई वी हैव यूज बीन ट्रेन, बट नाउ एक्टिव में बीन रिमूव होगा, वी हैव टू राइट डायरेक्टली ट्रेन्ड। हु, सो यहाँ पे जो सब्जेक्ट था हमारा आई, कन्वर्ट इनटू मी, before I started my service. So my teachers had trained me before I started my service. This was a completely active sentence. Now in the sixth one we have sentence, the seats had been reserved by the passengers before the bus started. So before the bus started, no change. So यहाँ पे तो हमको कोई चेंज करना ही नहीं है। The seats सब्जेक्ट है यहाँ पे, पैसेंजर्स ऑब्जेक्ट है, चलो उसको इंटरचेंज करना है। सो यहाँ पे द पैसेंजर्स जो ऑब्जेक्ट था, राइट नाउ इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट।
The passengers had reserved the seats before the bus started. बीन वहाँ पे रिमूव होगा और सब्जेक्ट एंड वर्ब इंटरचेंज होंगे. नथिंग न्यू, बात तो हम लोगों को रिमूव करना ही है. Now in seventh one, we have seventh number sentence. The thief had been caught by the policeman before he could run away. So before he could run away, no change. Only change in D. The thief had been caught by the policeman. So policeman यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है. The thief यहाँ पे सब्जेक्ट है. चलो हम लोग आंसर तो बाद में देखेंगे. पहले उसको हम लोग को पैसिव में टू एक्टिव कन्वर्ट करते हैं, यानी कि एक्टिव वॉइस में उनको यहाँ पे लिखना है. सो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है पुलिसमैन, सब्जेक्ट है थीफ, दोनों को इंटरचेंज करना है. चलो कर दिया. तो सेंटेंस विल बी लाइक दिस. The policeman had caught the thief before he could run away. समझ में आ रहा है? बीन रिमूव हो रहा है, बाय रिमूव हो रहा है, बिकॉज इट विल बी अ नाउ एक्टिव सेंटेंस. So here we have the answer. The policeman had caught the thief before he could run away. हम लोगों ने वो ऑलरेडी देख लिया है. चलो now we have self practice sentences. It's time to check your that information whatever I have given to you. चलो first one is Darshan had written the papers before he left. The first thing is that I didn't mention here active or passive, so you have to identify first one active or passive. Again, Darshan had written the papers before he left. So had and written, there is no been, so definitely sentence is active one. चलो active sentence है. बिफोर ही लेफ्ट कोई चेंज नहीं करना है हम लोगों को, उसको एज इट इज छोड़ देना है, लेकिन लिखना है, कन्वर्ट कुछ नहीं करना है. ओके. रिटन वर्ब है, सो डेफिनेटली द पेपर्स ऑब्जेक्ट. नाउ कन्वर्ट इनटू पैसिव वन. द पेपर्स हैड बीन रिटन बाय दर्शन बिफोर ही लेफ्ट. अगेन द पेपर्स हैड बीन रिटन बाय दर्शन बिफोर ही लेफ्ट. सो ये फर्स्ट सेंटेंस था जिसमें मैंने आपको हेल्प की है. ऑल टाइम आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू, सो फ्रॉम सेकेंड यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ. सेकेंड सेंटेंस इज काव्यानी वॉज बींग चीटेड बाय समवन. काव्यानी वॉज बींग चीटेड बाय समवन. फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई एक्टिव और पैसिव. यहाँ पे तो बींग है, BEING, जो डेफिनेटली सेंटेंस कौन सा हुआ, एक्टिव और पैसिव. ओके, पैसिव वन बिकॉज वी हैव बीइंग. कन्वर्ट कैसा करना हो वो आप लोगों को देखना है, कन्वर्ट करो खुद ही. थर्ड वन इज सो Sagupta had put the registers. Now had put, देखो आ गया put, had put. So we have idea that this one is active or passive. Then we have to convert into passive voice or active voice also. Fourth one, Sunny invited Mr. Marico for dinner. यहाँ पे आपको for Marico extra words है, वो भी ध्यान में रखना है. In fifth one, our sentence is Neha was elected by class group. Neha was elected by class group. So you have total 5 sentences for a self practice. With one sentence I have already helped you. So remaining 4 you have to convert into active or passive and also identify the tense. It will help you in examination to score 1 mark. So whenever you convert sentence in active or passive, आपको ये सेंटेंस लिखने के बाद लिखना है एक्टिव और पैसिव ब्रैकेट में लिखना है. उसके बाद जो में भी लिखना है सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यू है, पास्ट कंटिन्यू है, पास्ट परफेक्ट है और सिंपल पास्ट है. ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक. Just try it. You will definitely get your correct answer. So we will meet with a new topic and new lesson in next lecture. Till then, just keep watching our channel. Thank you so much.